वेलकम बैक टू मेक ट्रेडर। आई एम विशाल अमृतसर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स दैट यू कैन प्लेस टू ऑप्टिमाइज योर ट्रेडिंग strategies. First, market order. This is the simplest type of order where you can buy or sell a security immediately at current market price. It's perfect for when you want to execute a trade quickly. इसे एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है और उसमें आपको एंट्री लेनी है और उसका प्राइस 300 है, तब हम मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और एंट्री लेंगे। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब हमें 300 रुपीज की क्लोज एंट्री मिल जाएगी। Next, we have limit order. This allows you to specify the maximum price you are willing to pay when buying or the minimum price you are willing to accept when selling. The order will only be executed if the market price meet your limit price. Let's break it down with an example. मान लीजिए आप 295 रुपीज पर शेयर बाय का लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं। इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब स्टॉक की प्राइस 295 या उससे कम होती है। इफ स्टॉक प्राइस 295 से ऊपर रहती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। Let's talk about the stop loss order. You set a target price and once that price is hit, the stop loss order becomes the limit order. Let's break it down with an example. Imagine आपने 300 के प्राइस पर शेयर खरीदे और 290 के प्राइस पर स्टॉप लॉस सेट कर लिया। दिस मीन्स इफ स्टॉक की प्राइस 290 तक ड्रॉप करती है तो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सोल्ड किए जाएंगे, जिससे आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। मूविंग ऑन, आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO. AMO allows you to place orders outside regular trading hours. This order will be executed when the market opens. After market order उनके लिए परफेक्ट है जो मार्केट आवर्स में ट्रेड नहीं करते, बट उन्हें अर्ली मार्केट मूवमेंट्स के एडवांटेजेस लेने होते हैं। नेक्स्ट है कवर ऑर्डर. Cover order is a great tool. It combines a market or limit order with a compulsory stop loss order, reducing risk in volatility markets. Let's break it down with an example. जब आप कवर ऑर्डर के साथ शेयर्स बाय करते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस भी सेट करना होता है। अगर मार्केट अगेंस्ट मूव करता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और आपके लॉसेस को लिमिट करने में हेल्प करेगा। So next we have the basket order. This includes a primary order with a stop loss and a target price order. It helps in automating your exit strategy. Suppose आपने 300 रुपीज पर एक स्टॉक बाय किया और आपने 350 रुपीज पर टारगेट सेट किया एंड अ स्टॉप लॉस एट 290। टाइम द स्टॉक की प्राइस 350 हिट करती है तो आपके शेयर्स ऑटो सोल्ड किए जाएंगे फॉर प्रॉफिट, and if it drops at 290 your share will be sold to prevent further losses. Next, GTT order. GTT order that allow you to place buy or sell instruction which remain valid until the conditions specified by you are met or the order is manually cancelled. This is particularly useful for traders and investors who want to automate their trades without having to constantly monitor the market. For buying example, you want to buy a stock currently trading at 300. You set a GTT buy order with a trigger price of 290. When the stock price drops at 290, the GTT order is activated and the buy order is placed automatically. For selling example, you hold shares of stock currently priced at 300. You set a GTT sale order with a target of 320 and a stop loss at 280. If the stock price reaches 320, your shares will be sold for profit. If price drops to 280, your share will be sold to limit your losses. Lastly, we have basket order. This allowed to help multiple orders simultaneously, making it easier to manage your trading efficiency. For example, you can place up to 20 different orders at once, simplifying bulk trading activity. So that's all for today's video. I hope this breakdown helped you to navigate the different types of order. If you found this video useful, give it a thumbs up and subscribe to our channel for more trading tips and insights. Thank you for watching and happy trading.